Hello friends, welcome back to the YouTube channel. Today we will discuss one of the most important topic, one of the most important concept, that is structures. So in this video we will talk about the about structure. So what is the agenda of today? So we will learn about the difference between array and structures, and what is a structure in C++, why we use structure, and difference between C structure and C++ structure. And then we will learn nested structure in C++, and then we will write structure data into the file. Okay, we will write into only text file, and then read data from the file and store into the structure. Okay, so we will cover these topic in this video, and one by one we will understand each concept, and we will master the we will mastery in a structure. Everything we will understand in this video, okay, about the structure. So first concept is difference between array and structures. So everybody know what is an array. Array is basically collection of similar type of data. If we creating array a, it means a size 20. It means we are creating a one array which is size is 20, and the data type will be int. So whatever the value we can store in this array, we are able to store only integer type. All the value will be integer. We cannot store the float value, character value, double value. It means we cannot store the other data type. Only we can store the similar type of value. If we are creating the structure array of integer, array of character, then we can store only the character value. If we are creating double type of array, then we can store the double value only. We cannot store the character value and float value. So this is the drawback in the array. So to overcome this problem, the structure will be introduced, and structure will be overcome this problem. We in the structure we can store different type of value, like we can store in the structure integer, float, double, char. So in the structure we can store any type of value in the structure. The mainly difference in the array and structure is this only. We can create a structure as like whatever the type we can store, like integer, float, and double as. Okay, so if we the main difference is basically this. So first concept is a difference between the array and structures. So array store the similar data type, as we can discuss, as we already discussed. Okay, we array only store the similar type of value. Array only, if we creating integer type of array, then only we can store the integer value, not float value, not double value. But in a structure store different type of the different type of data, different type of, in the data type we can store the different type of value as well. Okay, so basically main key difference, what is the main key difference we can understand in this video. In C and C plus lots. Okay, so array is the same data type. Array we can store the same data type of value, but in the structure we can store different type of the different data types and different data type of value. Store the list. Suppose the same type of value we have to store, we will use the array, but store the list, we can store the single type of list. We in the array we can create only single type of list. Okay, in the structure we can store the complete record. Suppose that there is a one person who has a name, who has a employee ID, who has a salary. So we can record everything in this, in the structure. But in the array, less flexible. Arrays are less flexible because just we are storing single type of value, but structure is a more flexible. We can store multiple values. That's a this these are the main
difference in the array and structures. Basically, these main difference in the array and structures. Okay. Now, so I guess everybody can understand this difference between the array and the structure, why we use array and why we use structures. So you understand very well. So now I will jump into the next concept. What is a structure in C++? As we already discussed, by the structure we can define the user defined type, user defined data type. In the array, we just create a one variable and we can access the multiple value by that variable. But in the structure, we are creating a user defined data type, such that int, float, char, these are the predefined data structure. But by the structure, we are creating own data structures. Like we can create a employee type of data structure, student type of data structure, which type of data we want to record, and that type of data we can create by the structures. Okay, so that groups different type of the variable under one name. Okay, in one name we can group up the multiple type of value: name, age, record, address, city, sub. In these type of value we can record, group up into the single structure, single data type. But in array we can only store the single type of value. Okay, single type of value. So structure, by structure, how to create the structure is basically by struct keyword we can create the structure, and then structure name, we can put the structure name over here. Okay, we this is a student type of structure. We can also create the employee type of structure, and city type of structure. Any kind of type of structure we can create, right? Whatever you want to create a structure, you can put the name over here. Okay, in this example we are creating a student structures. So we have an integer, the student roll number, and the character, the student data type is a character, a name, a student name, and float, a student marks. So this is a way that we can create the structure. Okay, this is the format, this is the format we can create the structure. And by struct keyword we can create the structure, and then after the closing bracket we have to put the semicolon in. It is mandatory. Okay, now, so why we use structure in C++? Already we have discussed, like we use structure because it represents the real world entities. Structure is basically represent the real world entities. But real world entities we can also implement by the class in a C++. But in C we cannot real world entities, because in C++ don't have a actually class concept or structure concept have, but not more effectively. Like we will see next, like why it is not more important. So keep related data together, keeps related data together. Matlab, suppose that it exactly means is, we can suppose student record I want to put, so we can relatively data can put into the structures. Related data means something age or name or matlab, for the entities, for the related data we can put into the structures. Makes code organized and readable. We can make the code organized and readable format, and easy to store and retrieve data from the files. Okay, that is the uh, advantage. That's why we can use the structures. Okay, so next concept we are going to learn difference between the C structure and C++ structure. What is the main difference between the C and C++ structure? There are four, we are discussing four main structure difference in C and C++. So first difference is basically function inside structure. Can we create the function inside the structure? In C, we cannot create the function inside the structure, but in C++, we can create. Okay, in C, we cannot create a function inside the structure, but C++ we can create. Okay, access specifier. Access specifier, we know that there are three access specifier: private,
comma public and protected. Protected. These accessifier define the accessibility of the data member and member function. So this functionality is not in the C, but in C++ we have these functionalities. We cannot create a constructor in C plus C, and but in C++ we can create. Oops concept is not supported in C, and C++ is supporting. Okay, so like you can look that like we are able to create the structure in C++, like so we have created roll number and we can put this function inside the structure. Okay, so now we will create a one structure and then see how we can create the structure. So let's see. Okay, we have one main file. Okay, so first of all we can add one header file, include IO stream. We have included, and using namespace we can add namespace std and int main function return 0. Okay, so we are going to create the structures. So how to create the structure is by struct key word we can create the structure. Student name ka I'm creating a student structure. Then I am putting int character and name of the student, and I am taking size 20, and then int roll number. We are taking only two parameters in the structure. And okay, so now we have created a structures. Okay, a name and roll number. Okay, then if we want to access the member of structures, we have to create the one variable. Let's suppose student. I want to maintain the student one data. So I have created one student name, student one have a student name and student roll number, and also we can create multiples. Okay, student 2, student 4, 3. So in this, okay, now what we will do, by s1 dot s1 dot we will assign the name and roll number. Name equal to Karan Pal. Okay, s1 dot roll number, let's suppose roll number is 10, 21 we are taking. Okay, now we can print this value. So cout name equal to s1 dot name. Okay, we cannot directly write name, so the compiler does not able to find whose name. So I am printing the name of s1 student. So we have to tell the compiler like I want to print the s1 name, like student one name. Okay, then cout roll number. S1 dot
roll number. Okay, number, and we will update over here also roll number and also over here. Okay, now I will try to run this code and let's see what happened. I'm going to compile the code. For compiling, we have to put the compiler name and then file name .cpp. Okay, it is giving a error. Incompatible type in assignment of the const char 10 to char 20. Okay, there will be issue in assigning in a name. Okay, so what we can do? We can do one thing. We can copy this value into by string. There is a one function in the C plus strcpy. Okay, then let's see it is a working or not. We have to put this C string नाम की file was not declared in this scope, so we will add this file. Okay, now it is compiling and I'm running. Okay, name Karan Pal and roll number is 21. Okay, now if I am going to create a nest, this is the structure is basically how we are accessing, how we are creating the code. So we are creating one structure with a different type, name and roll number, student type of a structure, and in student of type structure we have a name and we have a roll number. Then we are assigning the value of the name and roll number, and then we are printing the value. Okay, displaying the value on the console. Now we are going to understand the how we can create the nested structure in C++. So nested structure is what does means of the nested structure. When one structure is inside another structure, it is called nested structure. Okay, एक structure के अंदर अगर हमारा दूसरा structure create करते हैं, we are creating second structure, that is called nested structure. Okay, so चलिए क्रिएट करते हैं. सो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है. वी हैव अ वन स्ट्रक्चर लाइक स्टूडेंट. इन द स्टूडेंट वी हैव अ नेम एंड रोल नंबर, एंड वन मोर फील्ड वी आर गोइंग टू add the address field. Okay, so we are first of all we are creating one structure of address. So struct address. Okay, and then in this structure we will add into the structure is street house number. तो हाउस नंबर कैसा होगा? इंटीजर टाइप का हाउस नंबर, एंड देन कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रीट, और विच इज 20 साइड. स्ट्रीट साइड 20 साइज. Okay, and then we are going to create the address type of structure. We are going to add the address. So इस स्टूडेंट का एड्रेस भी ऐड करना है, तो हम एड्रेस टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे और addr. ओके, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है कैसा है? एड्रेस है, और एड्रेस में हमारे अंदर क्या है? हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर. ओके, नाउ
अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करते हैं ना, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया एंड नाउ हमने नेम और रोल नंबर लिख लिया। अब स्टूडेंट का हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, तो इंट s1 डॉट बाई s1 ही वी कैन यूज द एड्रेस। अभी हमारे पास क्या है, एड्रेस स्ट्रक्चर है, मतलब स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एड्रेस स्ट्रक्चर है। ये एड्रेस टाइप का हमारा क्या डेटा टाइप है। तो इसका हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट होता है बहुत कुछ है। अभी हम दो पैरामीटर ले रहे हैं। तो इन दिस एड्रेस में, इस एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर हाउस नंबर है एंड स्ट्रीट है। इसको कैसे पता चलेगा कंपाइलर की, हम कैसे एक्सेस करें। तो अभी जैसे हम स्टूडेंट का नेम एक्सेस कर रहे थे तो s1 डॉट नेम लिख रहे थे, तो हम नेम एक्सेस कर पा रहे थे, मतलब नेम असाइन कर पा रहे थे, एक्सेस पर कर रहे थे। एंड देन रोल नंबर एक्सेस करना होता था तो s1 डॉट रोल नंबर लिखा एंड देन उसमें डाल दिया वैल्यू है ना, ऐसे ही प्रिंट कर लिए। अब अगर हमें इसका एड्रेस एक्सेस करना है तो एड्रेस हमारा क्या है, addr। ओके, सो नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, अब addr नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा n। inside addr we have a house number, house number। तो हाउस नंबर लेट सपोज 10 एंड देन हमें क्या करना है, स्ट्रीट करना है, हैश डॉट हम कॉपी करेंगे strcpy s1 डॉट addr विच इज दिस s1। इस स्टूडेंट 1 नाम के स्टूडेंट का जो क्लास है उसके अंदर हमने एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रीट addr देन स्ट्रीट। ओके, इसमें हम कॉपी कर देते हैं, लेट सपोज मंगतू कॉलोनी। ओके, स्ट्रीट नंबर इज सपोज स्ट्रीट नंबर 7। ओके, नाउ अब हम प्रिंट कराएंगे सी आउट हाउस नंबर s1 डॉट addr डॉट हाउस नंबर सी आउट एंड देन स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट और स्ट्रीट नंबर इन s1 डॉट addr डॉट स्ट्रीट। okay, let's run this code, there is no issue। okay, all the detail are coming, so what we can do, we can add indel, so it will break the line, indel 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 indel। now see, I'm going to compile the code। okay, it is compiled successfully and I'm going to running। so name is Karan and roll number, house number and street number। okay, in structure we are able to create a multiple we can store the different type of the value। okay, now next topic is we are going to cover the next topic like write the structure data into the file। okay, अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर का डेटा है we will write into the file। so फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, स्टोर द डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड इसके लिए हम यूज करेंगे एफ स्ट्रीम नाम की क्लास जो कि डेटा को राइट करेगा हमारे उसमें। ओके, तो एफ स्ट्रीम नाम की क्लास को हम यूज करेंगे। एफ स्ट्रीम नाम की क्लास हमारी क्या है, ये है।
तो इसको यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि होगी हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ये हमारी हेडर फाइल है। नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो डेटा हमने जो रीड कर लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा, सॉकेट फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो एफ स्ट्रीम नाम का की क्लास से हमने फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट रखा, इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो ठीक है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली न्यू। ओके, एंड मोड विल बी iOS : ऐप, अपेंडिंग मोड में रखेंगे। सपोज दैट वी हैव अ स्टूडेंट फाइल, वो क्या करेगा, लास्ट में ऐड करता जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस कोड। सो फाइल में हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, नेम s1 डॉट नेम, देन फाइल में हम राइट करेंगे s1 डॉट रोल नंबर, देन एस फाइल में हम क्या राइट करने वाले हैं, s1 डॉट addr डॉट हाउस नंबर। ओके, एंड देन फाइल में नेक्स्ट टू addr डॉट स्ट्रीट। ओके, अब इस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फाइल डॉट क्लोज, and cout we will print a message, file student data has been written in the file successfully. Okay, now let's try to compile this code. अभी हम देखेंगे स्टूडेंट नाम की कोई भी फाइल नहीं है, और अब जा रहे हैं हम कंपाइल करने। ओके, इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। जैसे हमने कंपाइल किया तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी टीएक्सटी फाइल अभी स्टूडेंट की नहीं बनी है। अब हम रन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट डेटा हैज रिटन इन द फाइल सक्सेसफुली। डेटा हमारा क्या हो गया, राइट हो गया सक्सेसफुली। लेट्स सी, देखते हैं कि कोई फाइल बनी है कि नहीं। स्टूडेंट नाम की टीएक्सटी फाइल बन गई है, और इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कुछ है कि नहीं। इसमें करणपाल और ये डेटा है। ओके, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हम राइट करने के बाद इंडेल ऐड करेंगे एवरी लाइन, तो हमारा हर डेटा जो होगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। इंडेल इंडेल। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं, कंपाइल करेंगे। ओके, अभी हम स्टूडेंट टीएक्सटी फाइल को रीड करते हैं। ओके, इट इज अपेंडेड करणपाल 21 10 एंड स्ट्रीट नंबर। ये इसने क्या किया कि अपेंड कर दिया, वो पुराना डेटा हमारा रिमूव नहीं करा और न्यू वन ऐड कर दिया। ठीक है, करणपाल 21 नंबर रोल नंबर है, हाउस नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 7। ओके, so thank you very much video